Calculate the volume of oxygen required for complete combustion of 0.80 dm cube of methane at STP. For a given volume of methane, how much oxygen is required for complete combustion at STP? See here, what is the reaction? Firstly, we have to know about the reactions, how they are reacted. Methane reacted with oxygen. We know CH4 reacted with oxygen. What happened? They are forming carbon dioxide and water. If you are completing the equation, what happened? Twice you have to multiply here, and this is the complete reaction, balanced reaction. Methane reacted with oxygen, they are forming carbon dioxide. Here you can see one value of methane gas combined with two volume of oxygen, and they are forming one volume of carbon dioxide and two volume of water vapor. So this reaction is there. So here we can see for one volume it requires two volume of oxygen, one volume of methane gas requires two volume of oxygen for complete combustion. So see here, they have given volume of methane gas 0.2 dm cube. So what is the oxygen? Twice of, ठीक है, तो oxygen required, volume of oxygen required for complete combustion is what? Twice of volume of methane gas for complete combustion, or twice of methane gas 0.8 dm cube. Volume of oxygen required for complete combustion, it will be 1.60 dm cube for complete combustion of methane gas. So see here, by balanced equation we can find how much volume required for complete combustion. We have found it 1.60 dm cube volume of oxygen required for complete combustion of 0.80 dm cube of methane gas. Today we will discuss about the average atomic mass. What is average atomic mass? Actually, the atomic mass of an element is the weighted average of atomic masses of its isotopes. It is called average atomic mass. जब हम चर्चा करते हैं, जब हम बात करते हैं बेटा एटॉमिक मास की, तो एक्चुअल में क्या होता है, एक एटम में उसके बहुत सारे क्या होते हैं, आइसोटोप्स हो सकते हैं. ठीक है, तो आइसोटोप्स का वेटेड एवरेज जो हम फाइंड आउट करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, एटॉमिक मास या वेटेड एटॉमिक मास. तो सी हाउ वी आर सेइंग, अगर सपोज करो देयर आर टू आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव एविडेंस यू नो. ठीक है, तो व्हाट हैपन, atomic mass of an element or average atomic mass is what? Atomic mass of first isotope multiplied by relative evidence plus atomic mass of second isotope multiplied by relative evidence of second and divided by total relative evidence evidence, that is called atomic mass. इसको मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ बेटा. ठीक है, कि सपोज करो जैसे क्लोरीन, I want to find the atomic mass of chlorine. When we will talk about the chlorine,
So there are two chlorine atoms, two isotopes are there. One is what 1735. सेकेंड जो आपका आइसोटोप होता है बेटा क्लोरीन का कौन सा होगा बेटा, मास कितना होता है उसका 37. ठीक है, अगर हम मास की बात करें, ठीक है, तो व्हाट आर द एटॉमिक मास, अगर हम बात करें बेटा एटॉमिक मास का और हम बात करें इसके रिलेटिव एविडेंस का, रिलेटिव एविडेंस, तो in chlorine element if we'll see, so there are two isotopes. One is what chlorine 35, second is what chlorine 37. If we'll see, ठीक है, तो chlorine 35, this is 37. When we will see the relative evidence, so they are in 3:1. Mean relative evidence of in chlorine atom 30 chlorine isotope chlorine 35 is 3, so chlorine 37 is 1 part. So we'll see what will be the atomic mass. Atomic mass is equal to what, by the formula what I have told you, atomic mass of isotope. Suppose first isotope chlorine 35, its mass is 35 and its relative evidence is 3, and atomic mass of second isotope is 37, so its relative evidence 1 upon total, this is 3 plus 1. So what happened, 3 5 3 9 105 plus 37 upon 4, that is what it will come 142 upon 4 divided, that will come 4 3s are 12, 2 will say about में कितना आ जाएगा बेटा 35.5. ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका नियर बाई व्हेन वी विल टॉक अबाउट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम, तो इट विल बी 35.5. तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है बेटा, अगर हम क्लोरीन एलिमेंट की बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ टू आइसोटोप्स, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. अगर हम रिलेटिव उसका एविडेंस देखें तो 3 पार्ट किसका होता है बेटा 35 का, 1 पार्ट किसका होता है 37 का. तो अगर हम देखेंगे तो उसका एटॉमिक मास जो आएगा, एवरेज एटॉमिक मास, वो कितना आएगा बेटा 35.5. तो विल राइट ऑलवेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5. One more example we will take when we will talk about the carbon. So what will be the atomic mass of carbon? So what we have seen कि carbon there are 3 isotopes, carbon 12, carbon 13 and carbon 14. So 3 isotopes are present in carbon atom, and what are their relative evidence? So if you will talk about the relative evidence in carbon element, so what are the different when we have taken as the percentage of that, so 98.892% of carbon 12 present, 1.108% of carbon 13 are present, and 2 into 10 raised to very small, 2 into 10 raised to minus 10% are carbon 14. Achha, after you will read about the carbon dating. So carbon 12 converted into carbon 14 when living things we have separated. अगर किसी लिविंग चीज़ को हम क्या करते हैं बेटा कट करके अलग कर देते हैं, तो जब वो क्या होता है डेज बीतता जाता है तो कार्बन 12 कार्बन 14 में क्या होता है चेंज होता है. तो उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, आज मॉडर्न डेज में हम एज फाइंड आउट करते हैं कि कोई 10 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, कार्बन 12 और 14 का परसेंटेज. ठीक है, लिविंग थिंग में हमने जनरली देखा तो जो कार्बन एलिमेंट है वो रिलेटिव एविडेंस ये रहता है. व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बाय दिस फार्मूला, व्हाट हैपन, atomic mass or average atomic mass of first isotope,
12.00 multiplied by 9.892. Second one 13.00335 multiplied by 1.108. Next one is what? 14.00317 and multiplied by relative evidence 10 raised to minus 10 and divided by total. So in percentage we have taken, so this will become 100. 108 plus 2 into 10 raised to minus 10. The relative percentage we have taken, so this will comes how much? 100%. Okay, so we will calculate it. So what happened? It becomes nearly 12.011. तो इसकी वैल्यू बेटा नियर बाई किसके आती है? 12.011. तो एटॉमिक मास अगर हम देखें कार्बन का तो कितना होता है? 12.011. ठीक है. अच्छा, अगर हम लोग व्हेन वी विल टॉक अबाउट द पीरियोडिक टेबल, तो हम इसका जो है राउंड ऑफ करके वहाँ पर रखते हैं. जिसको राउंड ऑफ करेंगे इससे 12 आएगा, तो कार्बन का हम वहाँ पर 12 लेते हैं. ठीक है. वहाँ पर राउंड ऑफ करने पर क्लोरीन का 35.5 आएगा, तो हम 35.5 लेते हैं. तो राउंड ऑफ करके हम इसको कहाँ रखते हैं बेटा? पीरियोडिक टेबल में. तो एटॉमिक मास अगर हम देखें कार्बन का, तो दैट विल बी 12.011.